Welcome to my channel Knowledge Discovery. I am your teacher Dr. Shivani Mitra. और आज हम पढ़ेंगे about computer networks. If you remember in the previous session, the previous video that I have uploaded, वहाँ पर मैंने पूरा 5 unit syllabus share करा था computer network का. So today we are gonna start unit number 1. So if you talk about computer networks, before we go deep dive into the detailed definition, let's see this architecture. यहाँ पर क्या है, there are 4 standalone systems A, B, C and D. Standalone means they are not connected to each other, they are not coordinating with each other, they are working alone, they are working in isolated manner. Now in case if you are person A और आपको अपनी कोई information share करनी है D के साथ, now you are not connected to that person, so the only way of sharing information from A to D is कि आप यहाँ से उठ के जाओ, maybe you can take the data in the pen drive, go here, plug in the pen drive and then share the data. In case if there is no network connectivity, nothing between A and D. अब इसमें क्या है कि there are lots of problems in this standalone architecture. सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कम्युनिकेशन. अगर A को D से बात करनी है तो वो कैसे करेगा. सेकेंड है रिसोर्स शेयरिंग. ना अगेन अगर इस तरह से आप आर्किटेक्चर यूज करते हो where there are different systems. अभी तो पिक्चर में मैंने 4 सिस्टम शो करे हैं. इन केस इफ there are 100 systems. अब 100 लोगों को अगर प्रिंट आउट निकालना पड़ेगा, then my company will have to spend for 100 printers. So that's also a biggest challenge because I can't afford to buy 100 printers for 100 employees. इतना आउटपुट ही नहीं जनरेट होता है कंपनीज का. So resource sharing is another problem in case of standalone systems. थर्ड आता है सेंट्रलाइज डेटा मैनेजमेंट. सिंस सब लोग अपना अपना डेटा अपने अपने सिस्टम में सेव कर रहे हैं, कोई किसी से शेयर नहीं कर रहा है. तो अगर मेरे को फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी एंड आई वांट अ कंसोलिडेटेड डेटा कि ABCD क्या कर रहे हैं, टेल मी or give me the data in a consolidated way. So it is very difficult to get it. मिल जाएगा, I can go to ABCD, collect it and then put it together. But again, if they are not connected in the network, bringing it together is a challenging task. एंड लास्ट आता है हमारा कॉस्ट एफिशिएंसी. जैसे मैंने आपको बोला कि अगर प्रिंटर ही लगाना है हमको, तो इंस्टेड ऑफ बाइंग 100 printers, in case if we connect these 100 computers in a network, one printer would suffice. तो बहुत पहले जब ये नेटवर्क का कॉन्सेप्ट ही नहीं था, दिस वॉज हाउ द आर्किटेक्चर यूज टू बी, कि सब लोग अपना इंडिविजुअल काम करते थे, डेटा शेयरिंग होता था, बट इट यूज टू बी अ टाइम कंज्यूमिंग एंड अ कॉस्ट इनएफिशिएंट वे ऑफ शेयरिंग द डेटा. तो इन सब प्रॉब्लम्स को रिमूव करने के लिए वी केम अप विद द कॉन्सेप्ट ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क. नाउ इफ यू लुक एट द पिक्चर, सिंपल क्या हुआ है, जो प्रीवियस पिक्चर थी उसमें कोई भी सिस्टम किसी से कनेक्टेड नहीं था. इस पिक्चर में अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर क्या हुआ है कि ये कंप्यूटर्स कनेक्ट हो गए हैं एक सेंट्रल डिवाइस से. सो नाउ इन केस इफ दिस कंप्यूटर वांट्स टू टॉक टू दिस कंप्यूटर, तो वो सिंपली एक अपना डेटा यहाँ पे सेंड करेगा एंड इट विल फॉरवर्ड इट टू दिस. सो इट विल बी डन इन सेकेंड एंड दैट्स हाउ कंप्यूटर नेटवर्क्स वर्क. सो इफ यू टॉक अबाउट कंप्यूटर नेटवर्क्स, इसमें दो टर्म होती है, वन इज कंप्यूटर एंड अनदर वन इज नेटवर्क. नेटवर्क आपको वैसे ही पता होगा कि फ्रेंड, जैसे अ ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स इज कॉल्ड अ नेटवर्क ऑफ फ्रेंड्स. तो फ्रेंड्स हम क्यों बनाते हैं, सो दैट हम अपनी चीज़ों को शेयर कर सकें, सो दैट हम अपनी कम्युनिकेशन को इन्हांस कर सकें और हमारी चीज़ें फास्ट हो जाएं, इसलिए हम फ्रेंड्स बनाते हैं. तो सिमिलर इज द कॉन्सेप्ट ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क. So computer, you know, a personal computer is a processing machine which converts raw data into useful information. And if you talk about a network, it is a group of computers working together in a collaborative manner. Now, if I club them together, I come up with the definition of computer network, which is a computer network is two or more computers connected together, whereas a computer that is not connected to a network is a standalone computer. तो जो प्रीवियस आर्किटेक्चर था ये वाला, ये एक स्टैंडअलोन आर्किटेक्चर है और यहाँ पर मैंने क्या बना लिया है, नेटवर्क बना लिया. राइट, आई होप यहाँ तक आप सब लोगों को समझ आ गया होगा. जब मैं कंप्यूटर कंप्यूटर बोल रही हूँ, इट इज नॉट नेसेसरी कि आप एक बड़ा पर्सनल कंप्यूटर लेकर आए और फिर नेटवर्क्स बनाए. You can, a computer can be anything. It can be a phone, it can be a laptop, it can be a tablet. So any such device is counted as a computer or a node in the network. आगे बढ़ते हैं. अब ये कंप्यूटर नेटवर्क्स हम फॉर्म क्यों कर रहे हैं, तो उससे पहले क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्रोसेस फ्लो ऑफ माय व्हाट्सएप मैसेजेस. इन टुडेज जनरेशन आई बिलीव जो भी मेरी बात सुन रहे हैं, मोस्ट ऑफ यू यूज व्हाट्सएप और वन और द अदर वे टू कम्युनिकेट विद देयर फ्रेंड्स. So what is the process flow? How do we communicate? Now, in case if there are two people, one is Tom and one is Harry, and Tom wants to send a message to Harry. So the simplest way is open up the WhatsApp, type your message, click on the arrow, and the message is gone. But behind the system, it is not that easy. So this is the concept of data communication. When you talk about data communication, it depicts
how the data flows from a sender to a receiver. So there are majorly 5 components of a data communication system, and this question can come in your exam, so listen carefully. When Tom wants to communicate with Harry, so there are two people, one is a sender and one is a receiver. So the sender wants to communicate with the receiver. अब मेरे को अपने फ्रेंड से अगर बात करनी है, then I will have to send a message. How will I send? अगर मेरा इंटरनेट ही नहीं आ रहा है, my WhatsApp won't work, my Gmail won't work, and in case if I am not connected to the network, I can't do anything. So what you need is a medium for communication. जब हम आगे पढ़ेंगे detail about medium, I'll tell you what are wires and wired and wireless medium. But for now you need to understand, अगर sender और receiver को communicate करना है via a message, then one important thing is your medium. Another important thing is that there has to be a protocol which is to be followed. Students generally confuse हो जाते हैं, मैम protocol क्या है, protocol क्या है. सिंपल प्रोटोकॉल का एग्जांपल है इन द लेमैन लैंग्वेज. व्हेन यू गो टू कॉलेज, तो कॉलेज जाने का टाइम है 10 o'clock, यू हैव टू बी इन द क्लास. नाउ इन केस इफ यू एंटर द क्लास एट 10:05, द टीचर वोंट अलाउ यू. सिंपल प्रोटोकॉल. You have to be in uniform. Second protocol. You have to wear your ID card. Third protocol. So similarly in network, जैसे आपने WhatsApp के messages में देखा होगा, लिखा आता है कि WhatsApp messages are encrypted. So behind that encryption, there are set of rules which are governing that encryption. Those are protocols. I'll tell you few simple examples. जैसे हमारे कुछ एग्जाम्पल्स हैं, FTP हो गया, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल. मेल को सेंड करने के लिए सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है. जैसे अगर सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल की बात करती हूँ, तो वो कहता है देयर शुड बी अ डेस्टिनेशन एड्रेस एंड देयर शुड बी अ सेंडर एड्रेस. आप ट्राई करके देख लो एक मेल करने का. इफ यू ट्राई टू सेंड अ मेल विदाउट डेस्टिनेशन एड्रेस, इट विल नॉट गो. So that's a protocol which is to be followed by sending an email. So when you talk about data communication, it is the process in which one computer transfers the data, instructions and information to other computer. Understood? So this is your data communication. इसकी भी definition आ सकती है 2 marks में. ये वही मैंने एक्सप्लेन करा है कि एक सेंडर होना चाहिए. सेंडर वो है जिसके पास एक सेंडिंग कैपेबिलिटी है. इट कैन बी अ कंप्यूटर और मोबाइल डिवाइस. सेकंड क्या है कि एक रिसीवर होना चाहिए. Then there should be a protocol that you are following and you have communication channel as well. Can you see which one is missing? Very nice. Yes, you can type in the chat box. Message is not there. If you do not have the message, data communication makes no sense. So fifth हमारा जो component है, it is a message, right? So these are the 5 components of data communication. प्रोटोकॉल के बारे में कुछ लाइंस और ऐड करी हैं कि वही सेम ही है, दैट इट इज अ सेट ऑफ रूल्स दैट गवर्न्स डेटा कम्युनिकेशन. सी नाउ फॉर एग्जांपल, इफ I want to communicate with somebody who does not know English, it is difficult for me to communicate. So in that case, I need to follow a protocol or certain set of rules to communicate. So that defines my protocol. This can also come as a 2 marker definition. तो उसमें आप लोग ये भी लिख देना कि प्रोटोकॉल क्या होता है. इट डिफाइंस द डेटा फॉर्मेट, कोडिंग स्कीम्स एंड सीक्वेंस ऑफ डेटा ट्रांसफर अमंग डिवाइसेस. जैसे मैंने बोला मेल लिखना है, तो मेल में 2 में हमारा डेस्टिनेशन एड्रेस होना चाहिए, फ्रॉम में सेंडर का एड्रेस होना चाहिए, एक सब्जेक्ट होना चाहिए. सो दैट्स ऑल्सो प्रोटोकॉल टू बी फॉलोड, राइट. नाउ इन केस इफ आई आस्क यू, हमने बहुत सारा पढ़ लिया नेटवर्क के बारे में, विच इज वन ऑफ द बिगेस्ट नेटवर्क? Oh, the answer has come first. It is internet. Without internet nowadays, means there is huge dependency on internet. एक second Wi-Fi नहीं आता है, so we people go crazy. So internet is one of the biggest networks that we are using nowadays to communicate locally, nationally, internationally. Everywhere we are using internet. नेक्स्ट टॉपिक जो है आपका वो है इफेक्टिवनेस ऑफ डेटा कम्युनिकेशन. नाउ बिफोर आई रीड दी सिंपल सा एक एग्जांपल देती हूँ. In case if I am sending a message to my friend, again Tom sending a message to Harry at 10 o'clock. Now what I want is, और मैंने मैसेज लिखा है, हाई माई बर्थडे इज टुमारो, प्लीज कम फॉर माई बर्थडे. सो वॉट आई वॉन्ट इज कि मैंने 10 o'clock मैसेज भेजा है, सो बाय 10:01 मैक्स माई मैसेज शुड बी डिलीवर्ड. It shouldn't be the case that it is not delivered to Harry, it is delivered to somebody else. It shouldn't be the case that the message is changed. मेरा मैसेज क्या था, हाई माई बर्थडे इज टुमारो. नाउ इन केस अगर मैसेज ही चेंज हो गया, दैट मीन्स माई डेटा इज नो लॉन्गर एक्यूरेट एंड आई डोंट वांट इट टू बी डिलेड. सो दीज 4 थिंग्स जो मैंने बोला कि मेरा मैसेज करेक्ट जगह पर डिलीवर होना चाहिए, मैसेज में कुछ भी मॉडिफिकेशंस नहीं होनी चाहिए, टाइमली डिलीवर होना चाहिए, एंड देयर शुड नॉट बी अ जिटर. नाउ व्हाट इज जिटर?
डिलीवरी एक्यूरेसी टाइमलीनेस तो समझ आ गया होगा. जिटर क्या होता है? टाइम लैग. जैसे पहले जब ये वीडियो कॉलिंग स्टार्ट हुई थी तो हम लोगों ने एक्सपीरियंस करा है कि वी यूज टू स्पीक फ्रॉम वन एंड, सेंडर बोलेगा एंड द रिसीवर यूज टू, मतलब उसे बहुत देर बाद सुनाई देता था या कुछ मिनट्स के बाद या सेकंड्स के बाद सुनाई देता था. तो वो जो बीच में लैग होता है उसको हम क्या बोलते हैं? जिटर. सो द डिलीवरी शुड बी फास्टेस्ट, totally accurate, timely delivery, and jitter should be minimal. So these are the four things that you have to remember: delivery, accuracy, timeliness, and jitter. अब जब मैं डेटा को डिलीवर कर रही हूँ, किस तरह का डेटा आप सेंड करते हो व्हाट्सएप पे? सिंपल सा, जस्ट कीप थिंक एंड you'll get the answer. You can send a text message to your friend. You can send them maybe a contact number or maybe some numeric values. You can send your pictures. You can share your videos. You can do a audio recording and send it to your friend. So these are majorly the 5 kinds of data that you share. There are others as well, but the others are also generated from these only or derived from these. तो 5 तरह से होता है: टेक्स्ट, नंबर, इमेजेस, ऑडियो एंड वीडियो. अब जो डेटा फ्लो हो रहा है आपका सेंडर से रिसीवर के बीच में, किस तरह से कर सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर वॉचिंग अ टीवी, तो आप बस टीवी देख रहे हो, आप टीवी के अंदर घुस के यू कैन मैनिपुलेट और यू कैन टॉक टू द पर्सन हु इज इनसाइड द टीवी. सो देयर इज वन वे कम्युनिकेशन. तो उसको हम क्या बोलते हैं? सिंप्लेक्स. या फिर आप रेडियो सुन रहे हो, एफएम सुन रहे हो, सो अगेन यू आर जस्ट लिसनिंग. So there is only one way communication from the radio person who is handling the FM to the person who is listening to it. So that is simplex communication. Half duplex means जैसे वॉकी टॉकीज होते हैं कि पहले एक बंदा बोलेगा एंड द अदर रिसीवर वुड रिसीव एंड देन आफ्टर रिसीविंग द मैसेज यू रिप्लाई बैक. So you are doing communication from both the sides but one at a time. Third is full duplex, the one that we are doing now when you do a video call or audio call to any of your friends. So you can communicate at the same time. So that comes under your full duplex communication. So these are the 3 types of data flows. Now next question which can come in the exam is why do you need network? वैसे आप लोगों को समझ आ गया होगा कि डेटा शेयर करने के लिए, इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए. स्टार्टिंग में अगर याद हो, व्हेन आई वाज टॉकिंग अबाउट चैलेंजेस, आई टोल्ड यू कि हार्डवेयर शेयरिंग इज आल्सो अ प्रॉब्लम. जैसे अगर 4 स्टैंड अलोन कंप्यूटर्स थे, अगर आपको याद हो, तो अगर आप स्टैंड अलोन वे में वर्क करोगे तो वील हैव टू गेट हार्डवेयर डिवाइसेस इन अ स्टैंड अलोन मैनर. बट अगर कंप्यूटर्स कनेक्टेड है नेटवर्क में, इवन इफ यू गो टू लैब, तो अपने कंप्यूटर लैब में जाते होगे तो वहाँ होगा कि जैसे 30 people are going to the lab, so there is only one printer to take the printout, or the main librarian has the printer, or it is kept in some admin room. तो ऐसा नहीं है कि in case if in the school or in the college there are 10,000 people, so there will be 10,000 printers. So there are around 5 to 6 printers, and that enables your hardware sharing. Funds को transfer कर सकते हो, Paytm करो, so that comes under your electronic transfer of funds through the network. अब internet चला गया, so no Paytm करो, that's gone. And then we have software sharing as well. See, now in the big companies, it is, or like if I talk about the institute where I am teaching, we have a learning management system. So it is not the case that we have individual learning management systems for all the facilitators. There is one LMS and we all are users of it. So ideally, we are sharing a software. But again, that sharing is enabled through your network. So hardware sharing, software sharing, information sharing, data sharing, transfer funds, they come as under the topic which is need of the network or need for network. नेक्स्ट मूव करते हैं. दो टर्म्स होती हैं, एक होता है नेटवर्क यूजर और एक होता है लोकल रिसोर्सेज. हमेशा याद रखना, बिकॉज टीचर्स अलग अलग टर्म्स यूज करते हैं. जब ये इन यूजर्स की आप बात कर रहे हो तो इनको आप बोल सकते हो, जो भी नेटवर्क के यूजर्स हैं उनको हम नेटवर्क यूजर्स बोल सकते हैं, नोड बोल सकते हैं, होस्ट बोल सकते हैं, वर्क स्टेशन बोल सकते हैं, सो पीयर्स बोल सकते हैं. सो दीज आर डिफरेंट टर्म्स फॉर क्लाइंट नेटवर्क यूजर्स. लोकल रिसोर्सेज क्या होते हैं? जैसे आपने एक प्रिंटर शेयर करा दिया बिटवीन दीज 4 कंप्यूटर्स, तो इसको हम बोलते हैं लोकल रिसोर्स शेयरिंग. मूविंग ऑन टू, ये वही है जो मैंने अभी एक्सप्लेन करा, सर्वर्स एंड वर्क स्टेशन, पीयर्स एंड होस्ट कंप्यूटर. सर्वर क्या है कि एक सेंट्रल डिवाइस है, एक बड़ी सी डिवाइस है. लाइक फॉर यू पीपल, थाउजेंड्स ऑफ यू आर लिसनिंग टू मी, सो यू ऑल आर माई नेटवर्क यूजर्स एंड आई एम द सर्वर. इफ यू हैव एनी क्वेरी, send it to me. Now I am a powerful computer because I have been teaching this since so many years. So I have a bigger capacity to answer, to respond to your queries and to distribute those files amongst you. So I am a server, and then you have host computers which are not as powerful as a server, but they are all connected to the server. So that's how you people have to remain connected with me. All right.
नेक्स्ट आता है हमारा दो टॉपिक्स और, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ नेटवर्क. एडवांटेजेस अभी तक आपको समझ आ गई होंगी. जो चैलेंजेस पड़े थे ना स्टार्टिंग में, इफ यू रिमेंबर इन द स्लाइड नंबर 3, तो वो ही चैलेंजेस यहाँ पर हमारी एडवांटेज बन गई हैं. जैसे आप हार्डवेयर शेयर कर सकते हो, फाइल्स को सेंट्रली लोकेट कर सकते हो, मल्टीपल यूजर्स एंड अकाउंट्स बना सकते हो नेटवर्क में, एक ही इंटरनेट कनेक्शन, बहुत सारे डिवाइसेस. अब आप लोग इंटरनेट कनेक्शन अपने फैमिली में यूज करते हो, सबने अलग अलग तो नहीं लिया ना. Even if there are 10 members or 20 members in the family, all of us are using one Wi-Fi. फाइल्स को सेंट्रली स्टोर कर सकते हैं. Devices can be accessed using network. So these are the four advantages. If you want, you can add more to the list. Disadvantage क्या है? इंटरनेट गया, नेटवर्क गया, तो अवेलेबिलिटी इज एट टाइम्स अ प्रॉब्लम. द मोर द यूजर्स इंक्रीज, जैसे आप ट्राई करना, आपके घर में वाईफाई है, 3 लोग यूज करेंगे स्पीड तेज आएगी, 100 लोग यूज करेंगे स्पीड वुड बी लेस. सो लार्जर नेटवर्क्स आर slower, and management is required because you need specialized people to manage your network. And at times security is also counted as a disadvantage because see, ek hai that you are going in a cab and the other one is that you're going in a private car. So a private car is a standalone car which you are not sharing with anyone, and where so you think that you consider yourself to be more safe instead of going in a sharing cab. So at times people do add security to disadvantages. Okay, few simple questions. Computer networks are connected by dash channels. Okay, transmission channel, very nice. Computers connected to server is, if you remember, I told you multiple names: host, network users, clients, peers. So those are computers connected to server. Dash has more capacity than workstation. I'll give you a hint. I have more capacity than you people in teaching because I have learned from these many years. The server. Dash sharing is for sharing printer, simple hardware sharing. A collection of computers connected together, the name of this course, network. Four types of sharing if you remember: hardware sharing, software sharing, data sharing, information sharing, fund sharing. That's the four type of sharing. What governs the rules? Rules, always remember, most important, protocols. And if you remember the 5 components of data communication system, so it was sender, receiver, message, medium and protocol. Thank you so much. I am finishing the class here itself, and tomorrow I will upload the next topics of unit number 1. In case if you have any doubts, you can post